Hello and a very warm welcome to all of you joining this webinar. I'm Nakma. Today in this webinar, we are going to look at the opportunities and challenges in engineering in the post-COVID world, because the ongoing pandemic has made us all more dependent on technology. It has also changed the shape of India's education industry. And as we move towards a more knowledge-based society, knowledge-driven economy, there is a strong need for great engineering graduates with sound technical knowledge. क्योंकि पैंडेमिक के बाद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी कई तरह के बदलाव आए हैं और यहाँ पर भी ह्यूमन डिपेंडेंस जो है वो कम हुई है. रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के जो क्षेत्र है वहाँ पर नई अवसर सामने आए हैं. इसके साथ साथ नई चुनौतियाँ भी हैं और इस तरह के जो बदलाव हुए हैं इस तकनीकी क्षेत्र में, उस पर चर्चा करने के लिए आपके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, आपके पास किस तरह के मौके हैं. हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़ रहे हैं अमृता यूनिवर्सिटी से चेयरमैन ऑफ द अंडरग्रेजुएट एडमिशंस ऑफ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग मिस्टर महेश्वरा चैतन्य. बहुत बहुत स्वागत है आपका चैतन्य जी, और धन्यवाद आपने हमें समय दिया. मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो कोविड का क्षेत्र है, हम अभी इससे जूझ ही रहे हैं इस बीमारी से, लेकिन बहुत सारे बदलाव दुनिया में आए हैं इस बीमारी की वजह से. इंजीनियरिंग के क्षेत्र की अगर बात करें तो किस तरह की नई चुनौतियां सामने आई हैं इस महामारी के बाद, और क्या इस महामारी ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नए मौके भी खड़े किए हैं छात्रों के लिए? आपकी क्या राय है इस पर? पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान टाइम्स हैव कम लाइक दिस प्लेटफॉर्म. जो अभी सवाल ज़्यादा ही है क्योंकि मेरे ख्याल में करीब 22 लाख स्टूडेंट्स दे आर राइटिंग दी जेई मेंस दिस ईयर, सबसे ज़्यादा है इस बार. तो आपका सवाल दोनों रिलेटेड है बेसिकली. मतलब है कि चैलेंजेस भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है. हाउ कैन वी टैकल दिस? अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे आएंगे कि जब आपने जो सही बताया कि we are not too much dependent on the humans rather on the machines now. छोटा सा एग्जाम्पल बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास जो ये मोबाइल है, हमारे पास ये मोबाइल से हम सब कुछ कर सकते हैं अभी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दैट गूगल असिस्टेंट और एप्पल दैट सीरी और कोर्टाना जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स है, वो खुद ही सब कुछ कर सकते हैं हमारे लिए. सो व्हाट आई थिंक इज both the challenges and opportunities will be put together. Challenges in the sense that when the students come after the plus 2 exams, और जब वो plus 2 के बाद when they try to come up with the engineering opportunities, सबसे पहला ये है कि इम्पोर्टेंस ये है कि मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. क्योंकि when we talk about robotics and artificial intelligence, इसमें मैथमेटिक्स बहुत है जी. Because we know that now even in medical or healthcare, we have seen robots doing this surgery. तो इतना प्रिसिशन चाहिए सर्जरी के लिए, तो उतना मैथमेटिकल एक्यूरेसी चाहिए उसमें. So the challenges are there, opportunities are there, and from my perspective, a student who is completing computer science will not be just limited to software development, rather उससे भी ज़्यादा. मान लो कि he is analyzing the data of COVID patients. उनको ये जानकारी ज़रूरी है कि how do you evaluate a patient, how do you test a patient, what are the testing parameters. So इसके लिए ये mathematical understanding और interdisciplinary thought process. And that is what the whole new education policy is coming up. तो मेरे ख्याल में ये होगा कि opportunities भी ज़्यादा होगी और उसके साथ challenges भी होगी, because so far the students were not able to think from technical point of view. जैसे आपने बताया पहले कि we are able to connect only because of technology. हमने कभी सोचा ही नहीं पहले, and we were always thinking about ground activities, offline classes, classroom teaching. अब पूरा बदल गया. And teachers and students were forced to learn online technology. So there are challenges as well as opportunities. But let me tell you one thing: if the students are able to utilize the current lockdown time by learning more and more, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल से अभी यूट्यूब है या कोर्सेरा है, अपग्रेड है, जैसे ऑनलाइन पोर्टल में बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है अभी.
and almost all the courses are free. तो कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये पूरा फंडामेंटल हो जाएगा इंजीनियरिंग में, and these are very important even if they are going for robotics. So my thing is post COVID pandemic or after the COVID pandemic, once it settles down, ये एक बात तो पक्का है कि the students definitely will have opportunities, क्योंकि हम अभी क्या देख रहे हैं कि health sector is ours is weak. So companies will start investing in health sector. Once there is investment, we can see there will be manufacturing of ventilators and other type of medical equipments. तो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो जाएगा तो मैकेनिकल इंजीनियर्स को अपॉर्चुनिटीज हो जाएगी. लेकिन एक तो बात है, दे विल, इफ दे आर यूजिंग रोबोटिक्स और रोबोट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, engineering students will have to know more about robotics also. So there are both whatever you asked, both are there, opportunities are there as well as challenges भी साथ में होंगे. बिल्कुल, जैसा कि अक्सर सभी मौकों में देखा जाता है कि चुनौतियां भी हैं, अगर और नए मौके अगर सामने आते हैं तो चुनौतियां भी हैं. देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज, देयर आर आल्सो चैलेंजेस, एंड वी ऑल नीड टू राइज अप टू दोस चैलेंजेस. लाइक यू सेड, देयर विल बी अ ग्रेटर डिमांड फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, बट देयर आल्सो बी डिमांड फॉर ऑटोमेशन इंजीनियर्स. तो ये आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जैसे कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, जो मोटर गाड़ियां बनती हैं, उस क्षेत्र में हमने देखा कि सबसे ज्यादा डिमांड है, रोबोटिक्स का इस्तेमाल होता है और नए नए प्लांट्स भी भारत में लग रहे हैं. मसलन अगर मैं उदाहरण दूं तो टेस्ला के भी प्लांट यहाँ पे लग रहे हैं. वैसे में जो क्या ये एक तरह से संकेत माना जाए कि ऑटोमेशन इंजीनियर्स के लिए जो इस क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि यहाँ मौके बन रहे हैं, तो भारत एक बड़ा बाजार बन सकता है, एक बड़ा मार्केट है आने वाले दिनों में? हाँ जी, जरूर आएगा, जरूर हो जाएगा, क्योंकि एक बात ये है कि गवर्नमेंट इज पुशिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लाइक एनीथिंग. तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम फैक्ट्री सेटअप होने चाहिए. एंड वैसे ही टेस्ला भी आ रही है इधर. टेस्ला अगले साल करीब दे विल स्टार्ट वर्किंग इन बैंगलोर फ्रॉम नेक्स्ट ईयर. तो गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पूरा प्लान होगा रोबोटिक्स के साथ. रोबोट्स ही मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि वो इतना प्रिसाइज होगा कि कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी नहीं आएगा. सो व्हाट विल हैपन इज more and more robots will be used, but that doesn't mean that जो नौकरियां जो है अभी जो है वो नहीं जाएगी, क्योंकि whoever is pursuing engineering, they will have to upgrade with more skills required to manage robots. तो अभी स्कूल टीचर्स क्या कर रहे हैं, वो सिखाते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के साथ सिखाते हैं. and they have to upgrade themselves when the pandemic came in. So they were most of these teachers never lost the job, but they had to upgrade themselves. So skills is very important. Skill तो होना ही चाहिए. इसे upskilling कहते हैं. You need to upskill. Upskilling is very important, and the students have to think from that point of view only. And let me tell you one thing. I have seen करीब 5-6 साल पुराने की बात है. वो क्या हो रहा था कि TCS, Infosys और CTS कंपनी आ रहे थे कैंपस में, and they used to recruit almost like 800-900 students. अभी वैसा नहीं होता, क्योंकि कंपनीज को भी ये स्किल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and they will test the skill before they join any company. So that is more critical. So even if the robotics come or robots starts managing, what we have to do it, we have to upskill ourselves. So one thing is, nobody taught us how to use iPhone, nobody taught us how to use Android phone, है कि नहीं? हम खुद सीख गए ना. तो we are living now with technology is part and parcel of our life. वैसे ही होगा job environment भी में भी. तो upskilling is very important, and automotive industry will emerge like anything, especially with electric cars. Can we say that even though with automation, there's also a fear with more and more use of robots and artificial intelligence, AI and automation, humans will probably lose their importance or their relevance, और शायद नौकरियां कम हो जाएंगी. पर जो आपने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप खुद को अपस्किल करते हैं, अगर आप अपनी क्षमता बढ़ाते हैं, तो उन चीजों के लिए भी मनुष्य की जरूरत जो है वो पड़ती रहेगी. So you need to upgrade yourself. हाँ जी, yes. एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी टोल बूथ कहाँ गए.
Where is the toll booth? No. Yeah. Toll booth has been now changed as the electronic collection centers, right? तो क्या हुआ? उनकी नौकरी सब गई. एक बात ये है कि suppose if they themselves if they had upgraded themselves, upskilled themselves, नौकरी नहीं जाएगी. Same with the automation engineers or those engineers who are working in the industry. They have to start working with machines. तो machines के साथ work करने के लिए तो skill चाहिए ही. So for example, एक छोटा सा example दे दूँ कि we have a collaboration with Bosch company like Bosch. We are training their engineers, and we are upgrading themselves, their engineers, so that they can work with robots to manufacture the equipments. So skilling is very important. All right. So, the children who are getting into robotics and who are getting into automation, we want to understand how much demand do you foresee for robotics and automation engineers in the near future? जो अभी आने वाला समय है, बहुत तरह के बदलाव हो रहे हैं. जो बच्चे इंजीनियरिंग में इन क्षेत्र को चुन रहे हैं, इस क्षेत्र में उनके लिए किस तरह का जॉब मार्केट देखते हैं आप? See, एक बात ये है कि हेल्थ केयर में रोबोट तो जरूर होंगे. Because instead of sending a nurse, you can send a robot. है कि नहीं? Oil fields में होंगे. Oil fields, rigging oil fields, and manufacturing industries, wherever human beings find it very difficult to move in, robots will be used. And at least a minimum of 20 to 30 million jobs will be created in next 15 years time in this robotics sector alone. See, robot matlab, it is not just robot with face and things like that. Any machine which can work is a robot. So that is how we have to understand. Robot is not just with a kind of human structure. No. Even when I talk about Android phone, Alexa is a robot. Yes. You cannot call it a robot because it cannot walk. It is a bot. तो उसमें भी है artificial intelligence. So आप जो भी सवाल पूछो वो जवाब दे. So that is how we have to think. So the robotics and automation, the industry will definitely develop. Millions of jobs will be created, especially in the Indian sector. क्योंकि अभी मेरे ख्याल में even in our Coimbatore city, we have restaurants serving food. Robots are serving food. Yes, we saw that even in Singapore. Yes. Robots as delivery boys. तो सोच लो कि robots कहाँ तक पहुँचेंगे. So that is how we have to think of. Yes. And my feeling is that once the Indian roads are very good with better transportation facilities, लग रहा है कि Amazon भी आएंगे उनका selfless और driverless car के साथ, and they will start delivering the goods either using drones or these things, the driverless cars, but it will take some time. And we know the Indian condition of roads and things. Yeah, so we are still not ready for those, but it has driverless cars. Exactly. Yeah, but what are the sectors? You spoke about the health sector. We saw in Singapore, you're talking about Coimbatore too, that there are people who are serving, like delivering goods. So health is one sector, maybe automobile is one sector. So जो छात्र engineering के हैं और जो automation और robotics में जाना चाह रहे हैं, वो शायद समझना चाहेंगे ये कि वो कौन सी मुख्य industry और है जिसमें इनका इस्तेमाल ज़्यादा होगा, जहाँ पे robotics and automation engineering explore कर सकते हैं और. See, first thing is that अगर छात्र robotics में जाना चाहते हैं तो engineering branch मुख्य विषय है और the first preference should be given to mechanical engineering क्योंकि mechanical engineering ही fundamental engineering है. Mechanical engineering will help them to think of the design. Or next is electrical engineering and the third is electronics engineering. So ये तीन branches है. It is closely related with robotics. Mechanical, electronic and electrical. These three are the most important branches. But as we know, for a robot to work, software तो चाहिए ही. Software के बिना कुछ भी नहीं चलता अभी. जी. धरती पूरी धरती अभी कंप्यूटर साइंस में चल रही है. ऐसे सोच रहे हैं लोग. So computer sciences cannot be just ignored. What they have to think is they have to select either of these three branches
और क्या होगा कि ईदर ऑन इन द थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर जितना electives है, because a BTech curriculum will have different elective subjects. Elective subjects मतलब अगर मुझे I want to go for aerospace, I can go for aerospace. If I want to go for robotics, I can go for robotics. If I want to go for communication systems, see सोचो कि अभी जो 5G आ रहे हैं, अगले साल आएगा 5G. So 5G is also very important in robotics. वो क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि रोबोट is also an agent that will communicate. उसको भी कोई कंट्रोल कर रहा है ना. For example, if we look at the way in which the people killed the scientists in Iran, this is a remote controlled machine. तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि मुझे कहीं से भी I can control a device. So that requires communication. So all these put together, robotics is a multidisciplinary program. तो जी तो जो बच्चे रोबोटिक्स में जो छात्र रोबोटिक्स में और या ऑटोमेशन में जाना चाह रहे हैं या जो वो इंजीनियर बन रहे हैं, तो ये भी अगर आप बता सके, उनको कुछ टिप दे सके कि वो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक बच्चे में जो उन्हें बेहतर रोबोटिक या ऑटोमेशन इंजीनियर बनाए, या वो क्या वो गुण हैं या क्या वो स्ट्रीम्स और डिसिप्लिन हैं जिसको वो डेवलप करें ताकि वो इन क्षेत्रों में बेहतर कर सकें. ओके, पहला है कि मैंने जो पहले बताया था कि डिजाइन थिंकिंग आइडियाज कॉन्सेप्ट्स वो अभी बढ़ रहा है. सोचो कि ये ऐसा एक मोबाइल है. सी can you imagine a camera with 108 MP in such a device? We never imagined this 10 years 15 years before. नहीं. तो ऐसा एक डिवाइस कैसे डिजाइन करें, ऐसा एक रोबोट कैसे डिजाइन करें, एलेक्सा जैसे इकोबोट जैसे एक छोटा सा डिवाइस कैसे डिजाइन करें, because it has to withstand the battery power, it has to withstand the heat generated by the battery. So first thing is design thinking is important topics for anybody who wants to go for robotics. दूसरा ये है कि they have to think from interdisciplinary point of view in the sense, when we manufacture a robot, how do you make sure that it will work, it will communicate, it will act as required by the programmer. तो वो सब उसकी सब जानकारी बहुत चाहिए. So robot is not just a device, it has to work according to the instructions. तो इंस्ट्रक्शन कौन देगा? वो सॉफ्टवेयर देगा. सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाएगा. So software developer has to understand what is the requirement. So they have to think from computational point of view, they have to think from design point of view, they have to think from the communication point of view. So जो बच्चे अभी decide करेंगे कि okay I'll go for robotics, the first thing is that they have to learn about design courses बहुत सारा available है Coursera में और YouTube में भी है, and it is already tailored for the students. We are also conducting some design oriented courses for robotics students who are interested in robotics. So design thinking is very very important. And जैसे मैंने बताया कि mathematics is very crucial. They have to learn mathematics a lot because a robot is expected to act based on instruction. तो इतना precise होना चाहिए कि it is not harming the human being. These are all the important things. जी, और जो आपने पहले भी बात बताई भी कि जो क्षेत्र हैं इंजीनियरिंग के, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, ये क्षेत्र हैं जिनको चुनना चाहिए अगर आप रोबोटिक्स में जाना चाहते हैं. उसी बात को एक बार और भी कुछ छात्र समझना चाहेंगे और विस्तार में कि किन ब्रांच के स्टूडेंट्स रोबोटिक्स में करियर बना सकते हैं, यानी कि कौन कौन से ब्रांच इसमें अहम होंगे. आपने मैकेनिकल के ऊपर जोर दिया है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो जो ये स्ट्रीम चुनते हैं उन्हीं का फ्यूचर है रोबोटिक्स में. हाँ जी, if a mechanical engineering is wanting or he wants to go for robotics, what he has to do is जैसे मैंने पहले बताया कि तीसरे साल में या चौथे साल में क्या करना है कि इलेक्टिव जैसे है बहुत सारे कोर्सेज होंगे इलेक्टिव्स में. So elective he has to choose what he is interested in. For example, if he is interested in robotic communication, then he has to choose those courses which are relevant for robotics communication.
And for example, if he want to integrate software and robot, then he will have to learn some courses in computer science. तो एक बात ये है कि they have to first think of domain which will they work in. Suppose if let us say उनका चाहत है कि we will work in healthcare industry, then they will have to know more about biology, medicine, healthcare devices, those things. For example, अभी क्या हो रहा है कि hospital authorities are sending these robots to clean the area, clean a surface. So whenever the robot is carrying the cleaning liquid, whether it will harm the robotic surface or anything, all those things needs to be understood. So if a student is wanting to or wishing to pursue career in robotics, first thing is that he has to choose which domain it is he wants to. Whether he wants to do in manufacturing, whether he wants to go with automobiles, whether he wants to go with healthcare sector. So he has to have an idea before that. That is more crucial. और आपके हिसाब से इसमें जो अभी रोबोटिक्स और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में को पढ़ाने में तो स्टूडेंट्स हैं जिनके सामने चैलेंजेस हैं, और वो क्या चुने और उनको क्या क्या करना चाहिए, आपने बताया किन क्षेत्रों में उनको अपने आप को मजबूत करना चाहिए, पर जो शिक्षक हैं वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंस, और अभी जाहिर है कि ये नई ये स्ट्रीम्स आई हैं तो उनके लिए भी चुनौतियाँ होंगी, उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं पढ़ाने में, क्या शिक्षक भी पर्याप्त हैं इसको पढ़ाने के लिए? ओके, एक बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि टीचर्स को भी अपस्किल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अपस्किलिंग ऑफ द टीचर्स आल्सो. So the thing is, there is something called as experiential learning. Robotics में ये experiential learning is very important because robotics is not just a course which can be learned with the help of computer. इसकी जानकारी के लिए robotics manufacturing, robotic assembly और robotics integration and working of the robot is very important. तो एक बात ये है कि whenever a student or a teacher let me put it in a different way, that a teacher or the student will have to learn or teach the course primarily based on the experiential learning. So experiential learning in the sense, for example, let me tell you from my university, we have a lab called as humanitarian technology labs. It is called as HUT labs. So humanitarian technologies lab क्या कर रहे हैं कि they will come up with ideas, बहुत सारे ideas होंगे कि societal benefit के लिए क्या करें, societal benefit के लिए कैसे robots का इस्तेमाल करें. They will think about ideas and they will teach the students in such a way that how this robot can be used for the benefit of the mankind. So they also need to have a very better understanding more about experiential learning so that it can be applied in the field of robotics. All right. There's another thing we would like to understand, which is in the coming near future or in the coming decade, आप भारत को कहाँ देखते हैं विश्व स्तर पर इन क्षेत्रों में? मतलब रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के क्षेत्र में भारत का स्तर कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा? भारत में बहुत बड़ी युवा आबादी है और भारत में से जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा करते हैं जब वो बाहर जाते हैं. यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो चुनौतियाँ हैं, उसको देखते हुए भारत का क्या आपको भविष्य लगता है इन क्षेत्रों में? भारत का भविष्य अच्छा ही होगा, क्यों? लेकिन एक बात तो ये है कि अगले 10 साल में से I don't think we will be on the top. It may take some time. Yes. Because जैसे आपने बोले कि बच्चे तो है, लेकिन हमारे बच्चे बाहर भी जा रहे हैं, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं. They have to contribute from Indian sector, but surrounding the environment may not be supportive, and they are using their brains for the other countries. And my thing is that our students are really brilliant. That is very very clear, and their talent has already been proved. जो अभी आप देख लो कि गूगल का CEO है, and there are top scientists already, Indian scientists already there in top companies across the globe. तो मेरे ख्याल में करीब 20 साल भी लगेगा कि भारत को ऊपर आने के लिए. मतलब if India wants to be on the top, it will take some time. But at the same time, the talents, we have to retain the talents. And my suggestion is that when the school students do their schooling,
it is very important that they have to participate in the competitions. Once they participate in the competitions, they can identify their weakness and strength. तो वो पहचान लिया तो it is very important that they have to come out of it, and how they can come out of the weakness. तो ये अभी जो pandemic time है, what they should do is they have to learn more and more with the available resources, so that they can contribute towards the economy, towards the future of the country in a better way. So if all the students are able to contribute in such a way, then definitely maybe India will come on the top in the next 1 or 2 decades. Okay, so before we end this conversation, to conclude, I would like to request you, if you have a message for the students who would be listening to you, who are engineering students, और जो ये जानना समझना कुछ ऐसी टिप उनके लिए आने वाले दिनों में अगर वो इस क्षेत्र को चुनते हैं, तो कुछ आप इसको समराइज कर सकते हैं, कुछ उनको सुझाव दे सकते हैं. जरूर. Thank you for the wonderful opportunity. तो पहले बात ये है कि first of all you have to have confidence. Do not lose the confidence. You can lose hope, but don't lose confidence. Confidence is very important. First thing. Second thing is that learn as much as possible. Do not waste the time. Whatever resources you have, whatever materials it is available, whoever is there to help you, you try to learn as much as possible. Try to utilize the opportunities you have. For example, which I told, there are a lot of competitions conducted by several companies. में पार्टिसिपेट करके अपना स्किल बढ़ाएं एंड अपनी जानकारी ले लें. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ वेयर आई स्टैंड इन द क्राउड. सो once I know where I stand, it is very interesting and important that I can improve a lot. So that this is my message, not to lose the confidence, be confident and move ahead by learning more and more. All right. Thank you so much. Thank you for those tips और जो सुझाव आपने दिए और जो रास्ता दिखाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद. और हमें उम्मीद है कि वो तमाम छात्र जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जो आगे चुनाव करने वाले हैं इन फील्ड्स का, उनको इस पे मदद मिली होगी. So this was Mr. Maheshwara Chaitanya from Amrita University, who's guided us with future opportunities, the challenges, as well as in robotics and automation engineering. उम्मीद है कि इसके बाद आपको अपना करियर चुनने में और भी मदद मिलेगी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you. Thank you, Nagma. Thank you.